don't stop. Thank you so much, Mr. Subhash. Six, and many more. He's had the unique ability to make films that churn the minds and hearts of today's youth and create an impact that even the younger filmmakers would struggle to create. Come on, let's give him a huge round of applause and let the standing ovations continue, ladies and gentlemen. These are our veterans, somebody who have defined our Indian cinema. We look up to all of them. Next one, of course, our charming Miss Divya Dutta ji, with films like Bhag Milka Bhag, Delhi 6, Stanley Ka Dabba. Let's give her a huge, huge round of applause and many more to her credit. She's looking absolutely spectacular and resonating with her positive personality. Let's give her a huge, huge round of applause. Of course, popularly known as Jagu Dada. Yes, Mr. Jackie Shroff, who absolutely needs no introduction, but somebody who has created unparalleled work across his volume of the years he's been in the Indian cinema. Somebody whom every actor in the industry looks forward to meeting, interacting, and all the members of the press. Somebody who's loved, and you can see how we all clap for him, and I think that's what shows the kind of work he's done. Of course, Mr. Shabir Boxwala, who's the co-producer of Shershah, Gupt, Mohara, and many more. Let's give him a huge round of applause. Thank you, Mr. Boxwala, for joining us. It's an absolute honor to have you today with us. Come on, ladies and gentlemen, let the applause continue. And of course, Mr. Sandeep Srivastava, the
highly acclaimed screenwriter, lyricist, and actor, widely known for his film New York, and he also wrote the screenplay for the film Sher Shah. Let's give him a huge, huge round of applause. Thank you, Mr. Srivastava, for joining us on this grand occasion. With this, I'd request all our dignitaries to please be seated, and of course, our members of press, thank you so much. Thank you for the acknowledgement. Well, ladies and gentlemen, we usually look at cinema as a medium of entertainment, if you all would agree. But in reality, cinema is not only, it's not just what it gives the slice of our lives, but also the force that drives how we live our lives. If you may agree, we all, to some extent, are driven by what we see, and that is our cinema. Films that we watch, invoke all kinds of emotion in us. And of course, patriotism and the love for the motherland is one of the strongest of them all. Our eyes swell up, our hearts melt, and our chests soar with pride. But what does it take for a filmmaker to create this sentiment of patriotism on screen and make the audience connect with it? To this and much more conversations, I'm going to take the liberty of asking our distinguished guests certain questions which will help us to understand their perspective a little better. Are you all up for it? A big yes? Yeah. Let's go ahead. So ladies and gentlemen, of course, we'd like to start by asking the question to none other than Subhash Kaiji. सर वो एक क्या चीज़ है जो फिल्म देखने वालों में देशभक्ति का जलजला उठा देती है? If you can let us know, of course, Karma, such a fabulous film it's been. We'd just like to know, how does a film invoke the sentiment of patriotism? First of all, good morning, and thank you very much for inviting us and for this honor. Thank you, Ms. Marcus, and everyone. You see, cinema has that magic which can connect to the audience, all its soul, heart, mind, thoughts, feeling. But it can evoke audience only when it touches you as a filmmaker. लिखने वाला जो राइटर है, पहले उसे देशभक्ति के बारे में फील करना चाहिए, फील होना चाहिए. फिर डायरेक्टर को उसके बारे में उतना ही महसूस होना चाहिए. जब जितना वो महसूस फिल्म बनाते हुए करेगा, उतना ही महसूस ऑडियंस फील करेगी. अगर मैंने ही आर्टिफिशियल तरीके से उसको ज्योमेट्री समझ के या मैथमेटिक्स समझ के या एक सुपर हिट बॉक्स ऑफिस समझ के किया कि पेट्रियटिज्म बिकता है, तो ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू फील इट फ्रॉम योर ओन सोल, विद इन योर ओन माइंड, love for your country and feel for your nation. ये स्वभाव में होता है आपके, या होता है या नहीं होता है. उसको आप इनकैश करने के लिए नहीं करते. मुझे याद है कि जब कर्मा की फिल्म में बना रहा था और स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो इट वॉज एन बेसिक प्लॉट ये था कि एक जेलर जो है 3 क्रिमिनल्स को लेके एक मिशन पे जाता है और एक विलन को पकड़ता है, उनको प्लान करता है. इसी प्लांटिंग ए क्रिमिनल अगेंस्ट ए क्रिमिनल इट्स वेरी वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लॉट. सो व्हेन आई वाज राइटिंग इट, देन आई थॉट कि आई हैड रिटन ए कैरेक्टर ऑफ मिस्टर दिलीप कुमार दैट हु इज अ वेरी पेट्रियोटिक पर्सन बाय हिमसेल्फ, एंड हिज वाइफ राइट्स ए सॉन्ग, हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए, एंड इज वेरी इंस्पायर्ड बाय हिज वाइफ thought, and he is a person who loves his prisoners, who takes care of his prisoners, he does his duty, and when he looks at his flag, his eyes glitter, genuine feelings. So when I was in the process of writing the script, then I thought when he employs these 3 criminals who are now going to be hanged, so it was Mr. Dilip Kumar's characters who brought them and infused his feeling into them. And that is how the whole picture became on a different platform
that these three criminals who were hardcore criminal, who could never think of their country or India, in the end they start shedding their tears for their country. And they become more patriotic than a normal person over there, because they realize the way his motivator, his mentor, Mr. Dilip Kumar, his teacher, is so genuine that where are we going? So it is always the leader who infuse this kind of school of thought or feeling for your country, for your family, or for anything there. सो करते 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 वो फिल्म जो है वो एक पेट्रोटिक रूप लेने लग गई, बिकॉज द कैरेक्टर्स आई हैड रिटन. एंड आई रिमेंबर दैट आई वेंट टू लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड बेसिकली नॉर्मली आई राइट इन माई स्क्रिप्ट, जो गाने का मुखड़ा होता है वो मैं लिख देता हूँ साथ में. फिर उसके बाद आनंद बख्शी जी कभी चेंज करते थे, कभी नहीं करते थे ऐसा. तो मुझे याद है कि मैं स्क्रिप्ट का एक फर्स्ट ड्राफ्ट लिख के आया, तो मैंने लक्ष्मी जी को बोला, लक्ष्मी जी की वहाँ गया म्यूजिक रूम में, तो किसी और की सेटिंग चल रही थी. इट्स इंटरेस्टिंग टू टेल स्टोरीज. तो किसी और की सेटिंग चल रही थी, तो मैंने उनको मैसेज भेजा कि मैं 5 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ, मुझे वापस चला जाऊँगा. तो उन्होंने अपनी सेटिंग को थोड़ा ब्रेक दिया और मुझे बुलाया. तो मैंने कहा कि सर मैं भी स्क्रिप्ट लिख के आया हूँ, लेकिन एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी है, आप इसको लिख लीजिए और कभी मूड आएगा तो आप इसकी ट्यून बनाइएगा. और मैंने वो लाइन लिख के दी उनको, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी देंगे ए वतन तेरे लिए. ये मैं आपको अभी सच्ची बात बताता हूँ. और कह के मैं चला आया बाहर आके एक प्रोड्यूसर था, मैं उससे बात करने लगा. 5 मिनट के बाद फिर मुझे एक फ़ोन आया, निश्चय कॉल आया, लक्ष्मीकांत जी ने बुलाया, अपने बाजे पे बैठे थे. बोले सुभाष जी सुनिए, मैंने आपकी लाइन पढ़ी है, मैं इससे बहुत प्रेरित हुआ, इट्स ब्यूटीफुल लाइन, जस्ट लिसन. और उन्होंने गाना शुरू किया, हर कर्म अपना करेंगे. अब आप सोचिए कि वो गाना उधर बन गया, क्योंकि कोई टेक्निक नहीं थी. एक फील था, मैंने लिखा, एक फील था, मैंने उनको दिया. एक फील है उनने बाजे पे हाथ रखा, एक फील है आनंद बख्शी साहब ने लिखा, एक फील था एक्टर्स ने गाया. और वो जो फील है, जेन्युइन फील, वो ट्रैवल होते होते सभी आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस के द्वारा पहुंचते पहुंचते वो फिल्म ने अपना ही एक रूप ले लिया, और उसका थीम पीस भी वो ही बन गया. और मुझे आज खुशी है कि जब आप ठीक सोचते हैं और अच्छा सोचते हैं तो ऑडियंस तक पहुंचती है, और वो गीत हो या फिल्म हो, उन लोगों को बरसों याद रहती है, जैसे आज भी आप याद हैं आपको. तो आई थिंक ये जो फिल्म मेकर्स हैं, हम लोग, जब तक हम सिंसियरली नहीं उस चीज़ में बिलीव करते और सोचते उस फीलिंग को, वो ऑडियंस में नहीं पहुंच पाती. अगर हम सोचते हैं तो पहुंच पाएंगे. क्या मैंने अपने सीन में या गाने में आंसू बहाए शॉट लेते हुए, शूटिंग करते हुए, लिखते हुए? तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे. नहीं बहाए हैं और बॉक्स ऑफिस सोचा है, तो बॉक्स ऑफिस में कुछ मिल सकता है, लेकिन वो लंबा नहीं चलेगा, वो दिल नहीं जीत सकता लोगों का. तो दिल से दिल का एक नाता होता है, जो फिल्म मेकर को ध्यान रखना पड़ता है. थैंक यू. Absolutely. Thank you so much. Such anecdotes of wisdom out there. As Mr. Subhash ji was talking so fondly about the movie Karma, I'd like to ask the question to Jagu Dada. Jagu Dada ji, starring in that wonderful and iconic film, years have passed, but whenever someone watches that film, it still stirs the emotions right there, and the cinema has evolved over the years. We'd just like to know, when you were shooting that film, any particular incident you'd like to highlight, and how has the journey been so far from that film, because that was, I believe, one of your initial in the career, one of the iconic films, and how was it to be starred in it, and your expression of gratitude and how you felt, Jagu Dada, from that film to now? स्टेज पर, मंच पर उपस्थित सभी गुणीजन को मेरा सादर प्रणाम. दिव्या जी, बॉस, सर, बाकी बड़ों, आप लोग इतने सब आए ले बैठ के